Good afternoon, friends. My name is Nikhil. Today I'm going to tell you and the topic that is verb. Actually, many audiences saying that they are not understanding in a proper English. So to help you, what I have decided that to understand the topic in a proper way, I'm going to use Hindi words. Means though I'm not proficient in Hindi, but I'm trying to speak a little bit Hindi to understand you more. My basic funda is to give you the topic more understandable to you. Okay, more presentable to you. So that is why today I have decided that I want to explain these topics in both English and Hindi so that it can be understood by many people, right? So though my Hindi is not so strong, so please cooperate me. If I'll commit any mistake, please forgive me. Okay, so let's start. A little bit I'll also speak in Hindi, okay, from today onwards, but I just need your permissions for that. Because I got different comments that please come and communicate with English and Hindi both. So for your respect your thoughts and views, so I have decided to use both English and Hindi language, okay, but not properly Hindi because my Hindi is not so strong. So okay, so please forgive me. Okay, let's start. तो देखिए व्हाट वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब होता क्या है? एग्जैक्टली वर्ब इज लाइक to do a work. In a layman term, verb is called work. If you're doing something work, any work like watching movies, eating, running, playing, doing classes, whatever, means we cannot live without verb. We have to do any kind of work. ठीक है, कोई भी काम हो उसको बोलते हैं verb. नॉर्मली आई मीन लेमन लैंग्वेज में कोई भी काम हो, सोना, रहना, खाना, पानी पीना, सो ऑल आर रीडिंग, राइटिंग, दिस आर ऑल कॉल्ड वर्ब. ठीक है, इसमें देखिए मोटा मोटा तौर पे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. मैं पूरा नहीं मतलब आ नहीं पा रहा हूँ. इसमें दो टॉपिक होता है, एक होता है बी वर्ब और एक होता है डिफेक्टिव वर्ब. सो व्हाट इज कॉल्ड बी वर्ब? बी वर्ब होता है बी एंड इज are, was, were, okay, have been, right? So these are called be verbs. Okay, और next होता है defective verbs. What are these? These are like can, could, may, might, ठीक है. Then shall, oh sorry, is shall, will, should, would. So these are called defective verbs. Means Indian verb इसको modals ही बोलते हैं, modals. इसमें क्या होता है कि यू नीड टू टेक द परमिशंस, ऑर्डर, शोइंग योर सिंपैथी, सजेशंस. ठीक है ना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को बोलना, एंड देन किसी को समझना, सजेशन देना, एडवाइस देना, ऑब्लिगेशंस, किसी को बताना. इट इज़ लाइक इट डिनोट्स योर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोलाइट टॉकिंग, ऑल दिस कॉल्ड मॉडल्स. उसमें देखना है कि किस सेंटेंस में वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स. उसमें हम लोग एक एक करके हम बताएंगे विथ ऑल एग्जाम्पल्स, राइट. तो मोटा मोटा तौर पे ये बात है कि व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, और किसी को बात करना है, और किसी को सजेशन देना है, किसी को कुछ ड्यूटीज़ देना है, किसी को एडवाइस देना है, पोलाइट टॉकिंग, राइट. यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, रिक्वेस्टिंग समथिंग, सजेस्टिंग समथिंग और एडवाइजिंग समथिंग. दिस आर कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स. मीन्स इसमें कोई रूल नहीं होता है. मीन्स जो भी सेंटेंस होता है उसके हिसाब से वो डीलिंग करता है. गॉट इट. So let's start with can. I'm giving you first example can. Okay. अब देखिए can का यूज कैसे होता है. Can is the present form of the verb. Present form. Okay. And can का past form होता है could. C-O-U-L-D. Could. Now, how do you use can? I'm giving one examples. More examples. Like I can eat. I can read.
you can write, okay, you can run, प्रेजेंट फॉर्म. ओके, जस्ट कैन लगाओ और उसको ऐड करो. आई कैन लीड, आई कैन रीड, यू कैन राइट, यू कैन रन, शी कैन व्हाट, शी कैन डू, शी कैन डू एनीथिंग. ठीक है. और शी कैन प्ले, शी कैन प्ले, और शी कैन रन. और मिस्टर राकेश, one present form, Mr. Rakesh can do the work, whatever. So can is used in this way. Present form use करो और उसको verb में convert कर दो. For example, I can eat, you can eat, she can write, I can play, you can play, he can play, you can do, she can do, they can do. Okay, so whatever. So you just use it and using a present form. Okay, present form, always present form. Okay, can means present form. You understand? I think so. Just can लगाओ और sentence बनाओ. It's totally easy, very easy sentence. Can में sentence form करना बहुत easy होता है. ठीक है ना. जैसे I can read, I can write, whatever. ठीक है. Can use करो और उसको present form use करो, तो you can form a sentence. ठीक है. Then I'll come to the could. अब could का use कैसे होता है मैं बता रहा हूँ. How do you use could? देखिए, could is used for examples like polite requesting, politeness or requesting something or request. Got it? अब जैसे for example, could you please give me your mobile number? Could you please give me your mobile number? Okay. Next, could you please give me 100 rupees? Okay. Could you please give me 100 rupees? Okay. Or you can say it could be done, or you can say the past form, it could be done. Like here, it could be done. But here यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया could you please give me your mobile number. I'm just requesting. मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को क्या अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो. Got it? और could you please give me ₹100? आप मेरे को 100 रुपीज़ दे सकते हो. Or you can say when you are using, went to the any kinds of restaurants. So what could you have? We're requesting or something. हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कुछ बोलने के लिए. बट यहाँ पर देखिए, it could be done. ये हो सकता है. मतलब इसको मैंने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट किया. It could be done. ये हो सकता है. Right. सो कैन यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंसेस. कुड होता है पास्ट फॉर्म जिसमें पोलाइटनेस यूज होता है. पोलाइटनेस, रिक्वेस्टिंग, इन दिस वे कैन और कुड यूज. ठीक है ना. तो आज के क्लास में आई हैव डिस्कस्ड कैन एंड कुड. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस विथ दिस टॉपिक्स लाइक मे, माइट, शैल, when you will use shall or will, okay, should, would in the next class. So I'm just briefing all these classes once again. There are two types of verbs. First one is be verb and second one is defective verb. Be verbs are be, am, is, are, was, were, have, has, been. These are called be verbs. And second option is defective verbs. What are the defective verbs? Can, could, may, might, shall, will, modal, should, would. These are called defective verbs. It is also called modals. ठीक है. इसमें देखिए मैंने आज मैं कैन और कुड में डिस्कस किया. कैन यू कैन से एनी, इफ यू वांट टू form any sentence you can use can, like I can eat, you can write, I can read, you can run, you can go, I can go, she can go, anyways. ठीक है ना. और सेकेंड थिंग कुड होता है पोलाइटनेस यूज होता है. रिक्वेस्टिंग, यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग तब कुड यूज होता है. जैसे कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर, और कुड यू प्लीज बोरो मी 100 रुपीज़, और व्हाट डू यू हैव, व्हाट कुड यू हैव, could you or it could be done. Okay,
So in this way you can form the sentences. Okay, so in today's class I have discussed can or could. So in the next class I can discuss with the different topic. Okay, so hope you understand, and if you have any doubt, please comment me in the comment sections. So please like, share and subscribe my channel, and Jai Hind.